जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जे के तिवारी वंस अगेन हियर विद यू फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर डाउट्स, फॉर योर सजेशंस and with a number of questions on two poets and critics, Coleridge and William Wordsworth. In today's box you have Coleridge and William Wordsworth. सभी को जय श्री राम है, सभी को नमस्ते है, सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग है। जुड़ जाइए फटाफट चैनल के साथ, शेयर कर लीजिए चैनल फटाफट और क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो भी आपको पूछने हो, जो भी आपके डाउट्स हो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, राइट। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी कंफर्म करिए, फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। फटाफट कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा, कुछ पूछना हो जो ना पूछ पाए हो, समझना हो प्रीवियस वीडियोस के बारे में, टुडेज वीडियो के बारे में, तो आप एक बार पूछ सकते हो, राइट। कंप्लीट ईएमआरएस की सीरीज चल रही है और ईएमआरएस के पीजीटी की सीरीज है। एंड इन द सीरीज ऑफ पीजीटी today you have Coleridge and Wordsworth, and today you will be having around 70 questions, around 70 questions Wordsworth और Coleridge पर मिला करके। So be attentive, open your notebook and your pen so that you could write the questions that are a bit tough for you. Though no question is tough, no question is easy, it totally depends on your preparation. So should we start without any delay? चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन गोइंग टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज हियर। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ओनली दैट फिल्म which fluttered on the great still flutters there, the soul unquiet thing. This is a line from the poem of which poem? Downton Abbey Revisited, Michael, Frost at Midnight, This Lime Tree Bower, My Prison. Four options are given here and you have to tell the answer. Only that film which fluttered on the great still flutters there, the soul unquiet thing. What is the soul unquiet thing? The soul unquiet thing is only that film, only that imagination. And these lines are from the poem Frost at Midnight. Frost at Midnight की पोएम है। थैंक यू सारिका, जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। खराब है तबीयत तो भी ठीक और नहीं खराब है तो भी ठीक। तबीयत को लेके नहीं बैठना चाहिए, इस तरीके से काम करिए कि तबीयत की तबीयत खराब हो जाए और आपको ठीक कर दे। मैं तो इस टाइप का क्रीचर हूँ, उस टाइप का प्राणी हूँ, है ना। चलो, लाइन्स आर फ्रॉम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न। यहाँ पे खड़ा हूं तो आप सबकी मोहब्बत की वजह से ही, जो कुछ भी हूँ अपने स्टूडेंट से ही हूँ। बिना स्टूडेंट के मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी जो है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स ही हमारी कैपिटल है, वही हमारी पूंजी है। और आप जैसे सिंसियर बच्चे जो हैं वो मेरा भी ख्याल रख लेते हैं और अपना भी ख्याल रख लेते हैं। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2, हाफ सेंटेंस इन Prakash his pilgrimage. Prakash his pilgrimage is a book, right? Prakash his pilgrimage is a book, and that book triggered of Kubla Khan. Kubla Khan is a poem by Coleridge. Whose work was Prakash his pilgrimage? Prakash his pilgrimage was the book that was being read by Samuel Taylor Coleridge in the previous night. When in the morning he woke up, he started writing the poem Kubla Khan, and while writing the poem Kubla Khan, he was disturbed by one of his friends, and because of that he could not complete the poem Kubla Khan. The question is here, who had written the book Prakash his pilgrimage? बुक लिखा किसने था? प्रकाश हिज पिलग्रिमेज। रॉबर्ट हैरिक, जॉन हैक्ल्यूट्स द कलेक्टर ऑफ ट्रेवलर्स टेल, Samuel Prakash, the London Parsons,
or Edward Prakash, the Globe Trotters, whose book was Prakash, his pilgrimage. So here, without applying your logic, you have to click the answer C, because Prakash is here and Prakash, his pilgrimage, is here. Who had written the book Prakash, his pilgrimage? And right answer to the question is C. This was a book by a 16th century traveler, a 16th century traveler writer, and the name of that one is Samuel Prakash. Uski book thi Prakash, his pilgrimage, and that book triggered Mr. Coleridge to write the poem Kubla Khan. Alright, then chalo. Next question, that is question number 3rd. One more point about this poem. The poem Kubla Khan had an epigraph. इसका एक epigraph भी है और वो epigraph has been taken from this book only, from Samuel Prakash, his pilgrimage. Epigraph has been taken from there, and this question is very important for EMRS students. For EMRS Pgt and DSSB Pgt, this question is highly important, right? A half sentence in Prakash, his pilgrimage, triggered of Kubla Khan. What was the work? Yeah, who wrote the work Prakash, his pilgrimage? All right. Next. Question number 3rd. How many poems were contributed by Coleridge to the lyrical ballads? Lyrical ballads was the joint effort of Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth. Both contributed to the volume. There were total 23 poems in the first edition of Lyrical Ballads of 1798, and out of 23 poems, the first poem was by Coleridge. The first poem was by Coleridge, and that first poem was Rime of the Ancient Mariner. Rime of the Ancient Mariner was the first poem of the volume, and this is the only poem that is properly ballad, right? And the last poem of the volume was by Wordsworth, and the last poem was Nta-Net. Nta-Net was the last poem, and first poem was Rime of the Ancient Mariner. Out of 23 poems, 19 were written by Wordsworth. 19 were written by Wordsworth, and 4 were by his friend and partner Coleridge. 4 by Coleridge and 19 by William Wordsworth. Alright, कोई confusion? कोई confusion नहीं? No confusion, no study, no confusion. So you can proceed to the 4th question. 4th question is here. 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran. Prima facie, the line is asked for the figure of speech, and here miles meandering mazy motion, ये figure of speech है, alliteration. But here question is of different type. कह रहा है, where does this sacred river directly run to? Where does this sacred river directly run to? ये sacred river जिसकी वो बात कर रहा है, mazy motion में जो चल रही है, 5 miles meandering, वो जा कहाँ रही है, ये क्वेश्चन है. बोलिए. 5 miles meandering with a mazy motion.
through wood and dale the sacred river ran, then reached though. कहाँ पहुंचती है, यही पोएम की लाइन पूछा है। और वंस अगेन दीज लाइन्स आर फ्रॉम कुबला खान, कुबला खान की लाइन है। एंड दिस क्वेश्चन इज अ PYQ ऑफ UGC, UGC नेट का क्वेश्चन है। एंड हियर टू ऑप्शंस आर करेक्ट, two options are correct, option A and option B. Option A and option B both were correct, so marks were given to both the options, right? Let me show you the poem जहां से ये ली गई है। ये these are the lines. 5 miles meandering with mazy motion through wood and dale the sacred river ran. कहां पर? The sacred river ran, then reached the caverns measureless to man. This is option A. And sank in the tumult to a lifeless ocean. That is option number B. So where does the sacred river go? Sacred river went to caverns measureless and to the lifeless ocean, right? Lifeless ocean and the caverns measureless. A and B both are true in this question. All right, A and B both are true here. I have shown you the lines of the poem Kubla Khan. Next question. सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आंसर ही क्यों ना दे दूं, आपको क्यों टेंशन हो। वैसे फिर भी आप आंसर बदल सकते हो अगर आप चाहो, है ना। Coleridge rhyme of the ancient mariner is a poem in 7 parts. Rhyme of the ancient mariner is a poem in 7 parts. Factual question है, like, and you have to just remember it. How many sections are there in rhyme of the ancient mariner? There are total 7 parts in rhyme of the ancient mariner, and this poem was earlier included in the syllabus of MA Part 2 in my university, right? Rhyme of the ancient mariner is in 7 parts. Next question. The opening lines of Wordsworth's Immortality Ode. वर्ड्सवर्थ के इमोर्टलिटी ओड की ओपनिंग लाइंस यहां पर दी हैं। There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. Right? These are the opening lines of Wordsworth's Immortality Ode. Then, in imitation of these lines, Samuel Taylor Coleridge wrote a poem, and he started the poem with the lines, there was a time when earth and sea and skies, the bright green vale and the forest's dark recess, with all things lay before mine eyes in steady लवलीनेस। मतलब यहां पर जो लाइन है उसी लाइन को पैराफ्रेज करके Coleridge has used for his poem. The question is, identify the Coleridge poem. In which poem he has used these lines? इस पोएम में उन्होंने these lines को यूज किया है in imitation of Immortality Ode's opening lines. And the right answer to the question you have to tell, guys, if you are preparing for EMRS, or if you are preparing for SET examination, or you are preparing for NET examination, so these questions are very much simple for you. Ajay Mishra, Firoz, Rita, Bhavna, Sonu, Ramesh, only these students have replied so far. Where are others? Haven't they joined, or they are not interested in replying to the question?
Yes, Neha Singh. Right answer to the question is not D. Right answer is not D, Sapna. The right answer to the question is the Mad Monk. These are the lines from the poem The Mad Monk. Though Mr. Samuel Taylor Coleridge was highly influenced by Immortality Ode's first four stanzas, and after going through the first four stanzas, he wrote the poem Dejection and Ode. और शायद इसीलिए आप डिजेक्शन एंड ओड पर आंसर कर रहे हो, बट दीज लाइन्स आर फ्रॉम द मैड मॉन्क, नॉट फ्रॉम डिजेक्शन एंड ओड. आंसर वंस अगेन यहां पे दिया हुआ है. ऑल राइट, read the lines again and then understand the line by Coleridge, then see the similarities and then search the poem, which poem has these lines. ये lines किसमें है? All right, next question. Simplest one. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by. इसका आंसर सबका सही है. सारे आंसर फटाफट इसका दे दीजिए. सबका आंसर सही है, मुझे इस पे कुछ नहीं बताना है. द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज was highly inspired, highly influenced by the French Revolution, and the French Revolution took place in 1789, and French Revolution is also known as Fall of Bastille. Right, Fall of Bastille or the French Revolution, right? It inspired both Coleridge and Wordsworth. Next question. Question number 8. The rhyme of the ancient mariner is about. Rhyme of the ancient mariner is about. किसके बारे में है राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर? अ पेरिलस एडवेंचर इन द सी. पेरिलस मीन्स डेंजरस. द एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ एन ऑक्टोपस. द कर्स ऑफ सी गॉड. द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंसेंट मार्नर. 4 ऑप्शंस हियर. अजय मिश्रा, रमेश यादव, सोनू, पूजा मौर्य. वेरी नाइस. श्वेता त्रिपाठी, जूली गौतम, स्नेह निशा अभियान, बुशरा यास्मीन, फिरोज खान, शशि दुबे, प्रियंका शर्मा, सपना गंगवार, धर्मपाल. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? राइम ऑफ द मार्नर, राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर इज ऑल about Bhavna, Rita, Neeraj, Aparna. This poem would have been read by you during your masters, and this poem is not about a perilous adventure in the sea, but this poem is all about the guilt and expiation of the ancient mariner. Right answer to the question is D. D इसका आंसर है, इसका आंसर A नहीं है. राइट, एक मार्नर होता है, राइट, एंसेंट मार्नर, और एक बंदा है हु वाज गोइंग टू ज्वाइन अ मैरिज पार्टी. ही वाज स्टॉप्ड बाय द एंसेंट मार्नर, एंड देन द एंसेंट मार्नर नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज गिल्ट. राइट, गिल्ट और एक्सपिएशन की स्टोरी उसको बताता है
this is the ballad, this is the folk tale, and right answer is D. Right answer is D. Please like and share the channel. सुरेश भाई मुझसे कह रहे हो क्या कि अपने फ्रेंड से कह रहे हो लाइक एंड शेयर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Who of the following was not a contemporary of Wordsworth and Coleridge? Wordsworth and Coleridge का contemporary कौन नहीं था? रॉबर्ट सदे, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट एंड AC स्विनबर्न. बोलिए आंसर. Who was not contemporary of Wordsworth and Coleridge, या आप ये भी कह सकते हो who was not a romantic poet. Who was not a romantic poet? Sir Walter Scott was the nominated poet laureate, and when he rejected the offer, Robert Sade was made the poet laureate, and Hazlitt is a romantic essayist, and AC Swinburne, he was a poet. AC Swinburne was a poet, but not a romantic poet, but a Victorian poet. Victorian poet थे वो romantic poet नहीं है. So right answer is C. Right answer is D, ना कि C. प्रियंका, नीरज और धर्मपाल इन्होंने C आंसर दिया है, बट C थोड़ा सा गलत है. हैजलिट रोमांटिक एसेइस्ट है, एंड हैजलिट वाज फ्रेंड टू वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. और एक बात यहां से और जानिएगा कि बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, हैजलिट ने उसको पेरुजल किया था, हैजलिट ने उसको पढ़ लिया था, और उनके पढ़ने के बाद पब्लिकेशन हुआ था लिरिकल बैलेड्स का. राइट. सो राइट आंसर हियर इज सी. AC Swinburne is not the contemporary of Wordsworth and Coleridge. He is not a romantic poet. Next question. Kubla Khan takes the epigraph from. I just told you the answer to this question. Kubla Khan takes an epigraph from Samuel Prakash, his pilgrimage, Hakluyt's Voyage, the book named Governor, Sir Thomas More's Utopia, from which work the epigraph of the poem has been taken. The book that triggered Mr. Coleridge to write the poem epigraph was obviously taken from there. Right? Epigraph भी वहीं से है. तो right answer to the question, nobody is going to click incorrect option. Right option is A. Okay, fine. Right option is A. Now come to the next question. Question number 11. Which of the following is not a quest narrative? Quest narrative कौन सा नहीं है? Shelley's Elasto, Byron's Manfred, Coleridge's Christabel, or Keats's Endymion. What is a quest narrative? Quest narrative होता क्या है? जी संगीता, गुड इवनिंग. इन अ क्वेस्ट नैरेटिव जो प्रोटैगनिस्ट होता है, he is always in search of something. Right? He is always on a venture. He is always on a tour. उसको quest narrative कहते हैं. Right? Quest means to search something, and from quest you have a word question. In question you always search for the answer, you always look for the answer. Right? तो quest narrative कौन सी नहीं है? odd one out find out करना है. शैली की एलास्टर, बायरन की मैनफ्रेड एंड कीट्स की एंडीमियन, इन तीनों के ट्रेवलर जो है, इन तीनों के प्रोटैगनिस्ट ट्रेवलर है, वो क्वेस्ट नैरेटिव होता है. और कॉलरिज की क्रिस्टाबेल is not a quest narrative. So right answer to the question is C here.
Who among the following romantic poets ended his life lauded and respected as the sage of Highgate? किस पोएट को सेज ऑफ हाईगेट कहा जाता है? Who is called as the sage of Highgate? बताओ आंसर. सेज ऑफ हाईगेट किसको कहा जाता है? जी दिल वाले रुद्रेश जी का स्वागत है. सेज ऑफ हाईगेट कहा जाता है सैमुअल टेलर कॉलरिज को. सैमुअल टेलर कॉलरिज इज कॉल्ड सेज ऑफ हाईगेट. संत कहे जाते हैं, फिलोसफर कहे जाते हैं. Which romantic poet defined a slave as a person perverted into thing? Perverted का मतलब होता है translated or converted. Right? Translated or converted. Who is a slave? Slave is not a human. He doesn't have any identity. And if you do not have freedom, it means you are no longer a human being. You are a thing. And slave lacks freedom. उसके पास freedom नहीं होती. तो slave is a person converted into a thing. उसको thing कहा जाता है. Perverted into a thing कहा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने. और आपके लिए क्वेश्चन ये है, you have to find out in which work, in which poem he has said that a slave is nothing but perverted into a thing. A slave is a person converted into a thing. किस पोएम में कहा है? राइट आंसर जो है बी है. क्वेश्चन नंबर 14. Here some theories are given, some terms are given in pairs, and here theorists are given. And you have to match. You have to match the terms propagated by, given by the theorists. चलो बता दो. थियरिस्ट है मैथ्यू अर्नल्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, जी.एफ. हॉपकिंस and Samuel Taylor Coleridge. And terms है Apollonian, Dionysian, fancy imagination, Hellenism, Hebraism, inscape and interest. Just you have to match करके बताइए which option is correct. Friedrich Nietzsche was a philosopher and he said that our mind has two parts. One is governed by Dionysus and other is governed by Apollo. The part that is governed by Apollo is the rational part, is the logical part, and the part governed by Dionysus is the part of emotion, right? Is the part of imagination. These are the two parts of the mind, Apollonian and Dionysian. ये थियोरी है फ्रेडरिक नीत्शे की. यही एक आपके लिए न्यू है. रेस्ट ऑफ यू आंसर पता है. हेलेनिज्म, हेब्रेनिज्म, फिलिस्टीन, इनकी बात करते हैं मिस्टर मैथ्यू अर्नल्ड. इंस्केप एंड इंस्ट्रेस की थियोरी propounded by जी.एम. हॉपकिंस and fancy and imagination theory was given by Samuel Taylor Coleridge. Right? अब आंसर लगा दीजिए. The simplest question था, a bit difficult but easiest one. मैथ्यू अर्नल्ड 1 का आंसर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, फ्रेडरिक नीत्शे का फर्स्ट, जी.एम. हॉपकिंस का फोर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का फैंसी एंड इमेजिनेशन. ऑलराइट, कोई डाउट हो तो बताओ. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो डाउट, नो क्वेश्चन होगा तब आगे चलेंगे.
लकी कहाँ गायब हो गई थी इतने दिन? होली मना ली, सॉरी दिवाली मना ली, छठ मना ली, तब से खाली हो गए अब, है ना? यू हैव मिस्ड अ लॉट अगर आपने नहीं देखा वीडियोस तो। कोई बात नहीं, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, आंसर समझ आ गया ना? आंसर समझ आना चाहिए, ऑप्शन ना आए समझ में कोई बात नहीं, पेपर में आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग identify Coleridge's companion in a fanciful scheme to establish a utopian community of free love on the banks of Susquehanna River. Mr. Samuel Taylor Coleridge wanted to establish a community based on egalitarian community, और वो समझ ये रहे थे, जो फाउंड करना चाहते थे यूटोपियन कम्युनिटी, उसका नाम था पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब सबकी सरकार, वेयर नोबडी इज अ रूलर बट इन फैक्ट एवरीवन इज अ रूलर। तो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिटी, अ यूटोपियन कम्युनिटी, जिसका नाम होता पेंटिसोक्रेसी। एंड फॉर दिस पर्पज ही वेंट टू अमेरिका। अमेरिका भी हो गए थे, दो हिज प्लान फेल्ड एंड ही केम बैक टू इंग्लैंड। द क्वेश्चन इज हु वाज हिज फ्रेंड, जिसके साथ वो गए थे, जिसके साथ उन्होंने प्लान किया था पेंटिसोक्रेसी का, एंड द नेम ऑफ द फ्रेंड वाज रॉबर्ट सदे। Robert Sade was the name of the friend with whom he visited America for the establishment of a utopian society, and the name of the utopian society is Pantisocracy. Right? Pantisocracy means a government for all. Pan means all, where everybody is a ruler. That is called Pantisocracy. The concept, the idea of Pantisocracy came into the mind of Coleridge, and then he was supported by his fellow late poet, his fellow friend, Mr. Robert Sade. Alright, so right answer to the question is B here. Next question. This is the repeated question for those students who are regular viewer, who are regular watcher. Read the question and write the answer. सुमेधा को भी हैप्पी दिवाली और नमस्ते। Humble and rustic life was generally chosen because in that condition the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less restrained, and speak a plainer and more emphatic language. The language too of these men has been adopted because such men hourly communicate with the best objects from which the best part of language is originally derived. Which of the following groups of the author's poems in lyrical ballads contradict this statement in the preface to Lyrical Ballads as pointed out by Samuel Taylor Coleridge? And question is repeated, so you have learnt the answer. Right answer is C, Michael, Ruth and the brothers. Alright. Next question. Which of the following statements about the lyrical ballads is not true? लिरिकल बैलेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट कैरीड स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेट्स। रिपीटेड वाला क्वेश्चन है ना?
It carried only one ballad proper, which was Coleridge's Rime of the Ancient Mariner. It also carried pastoral and other poems. It carried a preface that was added in 1800. And Thomas Gray's Elegy was published in 1751. Who refers William Wordsworth as an ever-enduring man? Ever-enduring man is Mr. William Wordsworth. And who called William Wordsworth an ever-enduring man? Who is called an ever-enduring man? Ever-enduring man is William Wordsworth. Who called his friend Samuel Taylor Coleridge called him an ever-enduring man. Next question. In the Rime of the Ancient Mariner, what disaster befalls the ship and the crew? What disaster befalls the ship and the crew? The ship is caught in ice and breaks into pieces. The fierce storm batters the ship and drowns the crew. Slimy things with legs attack the ship and kill many of the crew. The ship is becalmed and the crew dies of thirst. Which option is correct here regarding the Rime of the Ancient Mariner? What disaster befalls the ship and the crew? कौन सा डिजास्टर आता है, कौन सी तबाही आती है क्रू के मेंबर्स पर और शिप पर? बोलिए आंसर फटाफट. Ship is caught in ice and breaks into pieces. नहीं. Water everywhere, not a drop to drink. पानी तो है, but the crew dies of thirst and the ship is becalmed. ये इसका आंसर है डी, ना कि ए. राइट, जितने लोगों ने ए आंसर किया है ना, इसका मतलब उन्होंने एमए में ये पोएम ढंग से नहीं पढ़ी थी. शशि जी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, है ना. देखो सुमेधा मेरी स्टूडेंट था, बट उत्तर बी लगाई है क्योंकि मैं पहले पढ़ाता था, ये सेमेस्टर वाइज हो गया है, तब से मेरे हाथ से चली गई पोएम, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 20th कुबला खान. देखिए जितने क्वेश्चन अभी तक आपको मिले हैं 20 क्वेश्चन पर आप आ चुके हो. ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर और कुबला खान पर है. राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर एंड कुबला खान पर है. तो इफ यू आर on the verge of selection, then don't go to the examination center before reading these two poems in detail. You must have questions from these two poems in your examination. हाँ, मुझसे नहीं पढ़ा था इसीलिए. कुबला खान is thought to have been written in 1797, though it is an incomplete poem, or because of that incompleteness, Samuel Taylor Coleridge did not get it published. Publish नहीं करवा पाए. And when he was in urgent need of money, when he was facing financial crisis, then another poet of the time, Lord Byron, asked him to get the poem published. बायरन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो पोएम को अपने पब्लिश कर दें, और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है. Who persuaded Coleridge to publish the poem? It was Lord Byron, and the poem was published in 1816, though it was written in 1797.
1797. It was published almost 20 years later. 20 साल के बाद पोयम पब्लिश हुई थी. On the request of whom? On the request of Mr. Lord Byron. Match the work with the author. Author and work. The Excursion, Christabel, Milton, Queen Mab. And writers are Coleridge, Shelley, Wordsworth and William Blake. मैच करना है, मैच कर दीजिए. The Excursion is the poem by Wordsworth, without any doubt. Christabel is by Coleridge, Queen Mab by Shelley, and William Blake wrote the poem Milton. William Blake की poem है Milton. आंसर क्या है? The Excursion by Coleridge. फर्स्ट का ऑप्शन सी. सेकेंड Christabel by Coleridge A. Milton William Blake. थर्ड का ऑप्शन डी. And Queen Mab P.B. Shelley. Right answer is B. Clear? Next question. बस कॉलरेज के बाद वर्ड्सवर्थ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं. जस्ट वेट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. वेट फॉर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. Which character created by Coleridge makes the following account of her harrowing experience? 5 warriors seized me yesterday morn, me even me, a maid forlorn. They choked my cries with force and fright and tied me on a palfrey white. किस वीर योद्धा की बात यहां पर हो रही है? और पोयम क्रिस्टाबेल की ये लाइन है. एंड दीज लाइन्स आर अबाउट Geraldine. यही क्वेश्चन है. These lines are about Geraldine. The lines are from the poem Christabel. Next, very important question. Who viewed Wordsworth, Sade and Coleridge as representatives of a sect of poets, dissenters from the established systems in poetry and criticism, who constituted the most formidable conspiracy against sound judgment in matters political. चाहे जितना हम पढ़ लें, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हवा नहीं लगता है क्वेश्चन का. अरे क्वेश्चन के आसपास रहा करो, तब तो हवा लगेगी. जब रोज पढ़ोगे, रोज काम करोगे, डेली, तब आपको समझ आएगा, तब आपको हवा लगेगी. और अगर आप सोचें कि आप महीने में एक दिन पढ़ ले, एक दिन हमारी क्लास में आए ना, तो हवा चलना ही बंद हो जाएगी. लगने की तो छोड़िए. इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी ही आपका रिजल्ट है, वही आपका रिजल्ट ला सकती है. ये कमेंट देखिए वर्ड्सवर्थ पर, सदे पर और कॉलरिज पर. These 3 were called lake poets. Or who called them lake poets? It was once again Francis Jeffrey. Francis Jeffrey had reviewed Samuel Taylor Coleridge's Biographia Literaria. रिव्यू किया था उन्होंने, और उसी रिव्यू में उन्होंने लेक स्कूल ऑफ पोएट्स की बात की थी. और वो फ्रांसिस जेफरी हैं जो कह रहे हैं कि these 3 poets were a sect of poets. और कैसे सेक्ट है? Dissenters from the established system in poetry, the system that was in fashion during the period of Wordsworth and Coleridge. They dissented. They formulated their own rule, right? They formulated their own formula. And not only they were dissenters, but they constituted
the most formidable conspiracy against the sound judgment. Right, sound judgment against a conspiracy उन्होंने बनाई, and this was the statement made by Francis Jeffrey. So this question is equally important for EMRS and UPTGT PGT because Wordsworth is in your syllabus and the statement is about Wordsworth. Right, उन्हीं के बारे में है. So you must know the right answer. Then question number 24th. Samuel Taylor Coleridge's Dejection and Ode opens with an epigraph which is a reference to a ballad. Identify the ballad. Ballad of the Goodly Fair, La Bella Damson's Mercy, Ballad of Sir Patrick Spence, and Ballad of Gibbet. This is the right answer. Ballad of Saint Patrick, Sir Patrick Spence. यहां से उन्होंने रेफरेंस लिया था अपने एपिग्राफ का, Ballad of Sir Patrick Spence. Who was this Patrick Spence? Actually, another poet named Percy. Coleridge had read Percy's Relics. Relics was a collection of ballads collected by Percy, and he was deeply interested in the English and Scottish popular ballads. Who? Coleridge. Low's The Road to Zandu, ये उसकी poems थी. The influence of these ballads comes through in the meter, word choice, and spelling in the rhyme of the ancient mariner, especially in the first version of lyrical ballads. In rhyme as in Spence, the moon is powerful image evoking the power and unpredictability of nature. The moon serves as an omen in both works and is frequently the object of supernatural beliefs among the mariners who experience hardship at sea under its glow. Right? Percy की book थी Relics, and it was a compilation of Scottish and English ballads, or one of the ballad was on Saint Patrick Spence, and Samuel Taylor Coleridge was very much inspired from this ballad, so he took the epigraph from this ballad. La Bella Damson's Mercy was a ballad by John Keats, and John Keats का ballad तो बहुत बाद में लिखा गया था, कॉलरिज से तो बहुत पहले, सॉरी कॉलरिज के तो बहुत बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन. My first acquaintance with poets is an essay by Hazlitt. My first acquaintance with poets is an essay by William Hazlitt. Which poet does William Hazlitt describe as the only person I ever knew who answered the idea of a man of genius? The only person, actually Samuel Taylor Coleridge से मुलाकात हुई थी पहले,
विलियम हैजलिट की व्हेन सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज ऑन अ प्रीचिंग टूर, मुलाकात होती है एंड देन हैजलिट वाज इनवाइटेड टू लेक डिस्ट्रिक्ट. हैजलिट केम एंड द डे व्हेन हैजलिट रीच्ड देयर, कॉलरिज उनको लेकर के वर्ड्सवर्थ के यहाँ चले गए और कॉलरिज के बारे में हैजलिट ने बोला कि ओनली पर्सन आई एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ अ मैन ऑफ जीनियस. अ मैन ऑफ जीनियस का जो आइडिया है ये सिर्फ कॉलरिज के पास था और किसी के पास नहीं. एंड दिस स्टेटमेंट वाज कोटेड बाय मिस्टर हैजलिट इन हिज एसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? बताइए आंसर. The fine flower of 18th century meditative poetry किस वर्क को कहा जाता है? और विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को कहा जाता है. It means this question is on about William Wordsworth. Question number 26. जूली, पूजा, रमेश, रीता, स्वाति, सारिका, अपर्णा, शशि, गीता, फिरोज, सपना. शाबाश, वेल डन. कम ऑन प्रियंका शर्मा, वेरी नाइस. कम ऑन धर्मपाल, भावना, स्नेह, निशा विहान, वेरी नाइस. एवरीबडी इज करेक्ट. नीरज कुमार, नीरज का सही, इसका मतलब सबका सही है ना, कोई डाउट नहीं है. लिरिकल बैलेड्स इज नॉट द सिंगल वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, दो टिंटन एबी इज द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स. बट हियर द क्वेश्चन इज which work of Wordsworth, and lyrical ballad was not the complete work of Wordsworth. All right, so ये नहीं होगा. Immortality Ode was written in 1804, so it was written in 19th century, and question says fine flower of 18th century. Fine flower of 18th century. So right answer to the question is D. It is Tinton Abbey. Right, it is Tinton Abbey. सही आंसर है इसका D. And Shashi is now angry with me. Next question. Who was described poet of 19th century? जी आपकी आवाज D है और आपकी आवाज सुनी गई है. Who was described poet of 19th century? 19th century का poet किसे कहते हैं? वैसे Spencer is called poet's poet, right? Spencer was called poet's poet by Charles Lamb. Edmund Spencer. And 19th century में poet's poet is W. Worth. William Wordsworth is poet's poet of 19th century. Next question. अच्छा, वेरी नाइस सुनकर सोच में पड़ गए थे. वेरी नाइस. About whom Arnold write in his Memorial Verses? Memorial Verses is a poem by Matthew Arnold, and through this poem Memorial Verses, Matthew Arnold paid his tribute to German poet Goethe, Mr. William Wordsworth, and third one किसको ट्रिब्यूट किया है? लॉर्ड बायरन को. और अबाउट हुम
Arnold writes in his poem Memorial Verses, he led us as we lay at birth. He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of our birth. Cool flowery lap of birth, and this tribute was given to William Wordsworth. This is the right answer. Right answer is A. And here in this poem, Arnold described Goethe as the sagest head of Europe. Sagest head of Europe, Goethe को describe किया है. And Wordsworth led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. Though Matthew Arnold was a Victorian poet, but he was highly inspired from romantic poet William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ की इमिटेशन में ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29th. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है ये, PYQ. Which of the following is mismatched? William Wordsworth, the green linnet, William Wordsworth to the cuckoo, William Wordsworth to the skylark, William Wordsworth to I skylark. Which one is mismatched? Means which poem was not composed by William Wordsworth? Shabash. The green linnet, to the cuckoo, to the skylark, these poems are by William Wordsworth. And to a skylark, this poem was by P.B. Shelley. This poem was by P.B. Shelley, and this is the odd one out. ये odd one out है, ये different है. Rest of the three were written by, composed by Mr. Wordsworth. Green linnet, to the cuckoo, and to the skylark. These three were by Wordsworth, and the last one is by P.B. Shelley. Next, एक ऑप्शन ऊपर चला गया है. Which of the following statements is not correct about William Wordsworth? Which of the following 4 statements is not correct by William Wordsworth? 3 are correct, 1 is not correct, and you have to find out the incorrect option. Wordsworth records his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. Wordsworth started writing poetry in imitation of Alexander Pope. Option A. Option B says throughout his life he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Throughout life, he remained a staunch supporter of nature as well as formidable थे अपने पे खुद के भरोसे पर. Lyrical ballads was published at Cockermouth. Cockermouth was the place where he was born, and the prelude was completed in 1805. 3 options are correct, 1 is incorrect. And the incorrect option is C. Lyrical ballads was not published at Cockermouth, but it was composed at Lake District. Right, वहां पर इस पर काम हुआ था, ना कि Cockermouth में. So C option is incorrect. Rest of the 3, A, B and D are correct.
क्लियर? Next question, that is question number 31st. Who among the following said the child is the father of man? Child is the father of man is a very famous statement from the poem My Heart Leaps Up, and generally give the example of a paradox from My Heart Leaps Up. From where, who wrote the lines? ये question है, तो this is the simplest question, William Wordsworth. Next question. To whom, which of the following was Charles Lamb's very good friend? Charles Lamb, called the prince among essayists. Prince among essayists. He was a poet, novelist, essayist, dramatist, critic, ट्रांसलेटर, सब कुछ थे. और किसके फ्रेंड थे ये? कॉलरिज के, वर्ड्सवर्थ के, शैली के और फिर कीट्स के. एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल. Christ Hospital was not the hospital. In fact, it was a school for poor children. And Coleridge and Charles Lamb both were living there simultaneously. दोनों वहीं पे रह रहे थे और वहीं से इनकी दोस्ती होती है, वहीं से इनकी फ्रेंडशिप होती है. And even Charles Lamb's early poems were published in Coleridge's anthology. Coleridge के एंथोलॉजी में उनकी पोएम्स पब्लिश हुई थी. लैम्ब के वेरी गुड फ्रेंड थे कॉलरिज, और कॉलरिज ने लैम्ब को कहा था जेंटल हार्टेड लैम्ब. जेंटल हार्टेड लैम्ब. कॉलरिज ने बोला था लैम्ब को, और लैम्ब ने कॉलरिज के बारे में क्या बोला था? एन आर्क एंजल. आर्क एंजल बोले था कॉलरिज के बारे में. राइट? किसने? चार्ल्स लैम्ब ने. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. आज ज्यादा मजा नहीं आ रहा है ना? ज्यादा बोर हो रहे हो आज? मन नहीं लग रहा है? लग रहा है? बताइए ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइएगा. आज मन नहीं लग रहा है? क्वेश्चन आपके मुद्दे के नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है? जेंटल हार्टेड लैम्ब. नहीं, कुछ तो आज है मामला. Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical poem? ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. आप कैसे जान जाते हैं सर जी? मजा नहीं आ रहा है ना नीरज? इसी बात का तो सर जी हूं मैं. कैमरा पढ़ाते पढ़ाते भी 5 साल हो लिया. 2018 के लास्ट से लेकर के
19, 20, 21, 22 और 23 बीत रहा है, 1 महीने बचा है, 5 साल हो गए कैमरे को पढ़ाते हुए, और उस 5 साल से पहले 15 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। और आपका चेहरा देख करके समझ जाता हूं कि तुम्हें क्या समझ में आया पढ़ाया हुआ और क्या समझ में नहीं आया। तुम्हारा चेहरा देखकर कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं, मुझे होता है। ये साइकोलॉजी होती है टीचर की, ये पेडागॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और तुम्हें देख के बता दूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करके बता देता हूं। अब कैमरे से आदत हो गई है, तो अब जो आप मैसेज लिखते हो ना, मैसेज देख के जान जाता हूं। ये तो वर्चुअल मैसेज है, वैसे राइटिंग देख के भी मैं जान जाता हूं कौन सा बच्चा कितने पानी में है। ये सब गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which poem of the Wordsworth William Wordsworth considered the greatest autobiographical poem, or a greatest autobiographical poem is The Prelude. Next question. In which poem does Wordsworth write, "Come forth into the light of things, let nature be your teacher"? Come forth into the light of things, let nature be your teacher, ये कहाँ की लाइन है? The tables turn, the world is too much with us, I wandered lonely as a cloud, the solitary reaper. शाबाश। I wandered lonely as a cloud, ये कहाँ की लाइन है? तो खुद ही एक पोयम है, डैफोडिल्स की लाइन है ये। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सॉनेट है, और इस सॉनेट में मिस्टर वर्ड्सवर्थ मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड इन द टेबल टर्न्स, जो टेबल टर्न पोयम है, एक इसकी सिस्टर पोयम भी है। टेबल टर्न की सिस्टर पोयम कौन सी है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसको सिस्टर पोयम कहा जाता है। और हियर ही सेज दैट नॉलेज डजंट रिजाइड इन अ बुक, बट नॉलेज कहां पर है? इन द लैप ऑफ नेचर, इसीलिए उसका नाम है टेबल टर्न। टेबल को टर्न कर दो। अभी तक क्या समझ रहे थे? नॉलेज बुक में है, और अब उसको उलट दो, बुक में ना होकर के नॉलेज नेचर में है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी दाई टीचर। और ये कहां की लाइन है? ये टेबल टर्न की लाइन है, राइट? टेबल टर्न की लाइन है। 35th, ऐसे क्यों सोच रही हो रीता कि मेरे लिए भी बता दो सिलेक्शन होगा कि नहीं? अरे कैमरे में कहां से बता दूं? आप कहां दिख रहे हो कैमरे में? रिप्लाई एंड एक्सपोस्टुलेशन नहीं भाई, मैंने गलत बता दिया। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई उसका नाम है, वो सिस्टर पोएम है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नहीं है, राइट? सिस्टर पोएम जो है वो एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई है। आशीर्वाद पिछली बार नहीं दिया था क्या श्वेता? ऐसे ब्लेम करोगे? असल में पिछली बार श्वेता, शशि, ये सब हमारे स्टूडेंट थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड पूरा सिलेबस हम लोग कर नहीं पाए, और इन लोगों का एक एक दो दो क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक गया। उसके लिए मुझे भी रिग्रेट है, बट कोविड का टाइम आ गया था, तो क्या किया जाए? हाँ, मैं दिख रहा हूं ना, तुम थोड़े ना दिख रही हो। तुम्हें मैंने कब देख लिया सपना? अरे ऐसे झूठ फैलाओगी अब? अरे यार ऐसे मजाक मत करो। टेनिसन सक्सीडेड whom as the poet laureate of England? सबसे सस्ता वाला क्वेश्चन है, कल भी इस क्वेश्चन पर आपने बात करी थी। टेनिसन सक्सीडेड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड सक्सीडेड रॉबर्ट सदे। राइट आंसर इज बी। With this key, Shakespeare unlocked his heart. With this key, Shakespeare unlocked his heart.
The words are from Coleridge, Byron या ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। कहां की लाइन है? क्वेश्चन नंबर 36। Nuns fret not। Nuns fret not एक सॉनेट है वर्ड्सवर्थ की, जिसको सॉनेट अपॉन सॉनेट कहते हैं। सॉनेट अपॉन सॉनेट कहते हैं। और एक सॉनेट है स्कॉर्न नॉट द सॉनेट। स्कॉर्न नॉट द सॉनेट एक ये सॉनेट है, और दोनों ही विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉनेट है। दोनों ही विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉनेट है। एंड इन स्कॉर्न नॉट द सॉनेट, इन स्कॉर्न नॉट द सॉनेट, the line comes with this key: Shakespeare unlocked his heart. And this line was written by William Wordsworth. Option is D. Clear? D option है यहाँ पर, जहाँ पर he quotes Shakespeare, Milton, Petrarch, right, Boccaccio, इन सब की बात करते हैं कि everybody used the sonnet. And here in the romantic period there are a few critics who are against the genre sonnet, right? उनके लिए sonnet है, critic scorn not the sonnet. Clear? 37th. To whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? The prelude is addressed to, or the prelude is dedicated to, किसको dedicated है? The prelude is dedicated to Coleridge. Coleridge को dedicated है poem. Wordsworth's autobiographical poem The Prelude is dedicated to Samuel Taylor Coleridge. Next, which of the following is a poem by Wordsworth? कौन सी पोएम इसमें से वर्ड्सवर्थ की है? बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है ना? द लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। द फॉरसेकन मरमेन मैथ्यू अर्नल्ड की पोएम है। On first looking into Chapman's Homer जॉन कीट्स की पोएम है। और डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। Right answer to the question is A. Daffodils is a poem by William Wordsworth. Rest the three are by different poets. For whom Keats used the term egotistical sublime. Keats is popularly known for his two phrases, egotistical sublime and negative capability. Negative capability and egotistical sublime. Negative capability means to have the ability to be in uncertainties, to be in doubt, right? वो negative capability है, and negative capability, the term is negative but it has very positive connotation, and this term was coined for William Shakespeare, and he coined the word egotistical sublime to criticize William Wordsworth. William Wordsworth को criticize करने के लिए he coined the term egotistical sublime. Egotistical sublime का मतलब होता है excess of emotions, excess of subjectivity in poetry.
और एक्सेस ऑफ सब्जेक्टिविटी जो है दैट इज ईगो ऑन सबलाइम, दैट इज egotistical sublime, and Keats used the term egotistical sublime to criticize William Wordsworth. All right, next question 40. Question number 40. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers some shady haunt among Arabian sands, wherefrom the above quoted lines of Wordsworth has been taken. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands among some shady haunt among Arabian sands. कहां से लाइन ली गई है? कहां गायब थी हुडा? बिरयानी बना रही थी? Solitary reaper, ode to nightingale, to the cuckoo, or to a skylark. From which poem these lines have been taken? No nightingale did ever chant more welcome notes to the weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. These lines are from the poem Solitary Reaper. Solitary Reaper is a poem where a girl from Scotland is singing a poem. She is doing two things simultaneously, reaping and singing. Right, singing and reaping दोनों कर रही थी, और Wordsworth was unable to understand the language of the poem, so he stopped for a few minutes, listened to her singing, and then go ahead. Right? ठंड लगी है, दावत में गई थी. अरे ठंड लगी, दावत में गई क्यों थी फिर? वैसे लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, खास करके दावत में, खास करके शादी में लड़कों को ठंड लगती है. लड़कियां इन सारी चीजों से परे हैं. शादी पार्टी में कहीं भी जाके देखिए, कोई भी लड़की, कोई भी महिला वूलन क्लॉथ्स में नहीं होगी, वार्म क्लॉथ्स में नहीं होगी, सब साड़ी पहने होंगी और किसी को ठंड नहीं लग रही होगी. ठंड भी टोटली सब्जेक्टिव मामला है और वो पुरुषों को ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन टू विमेन. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. चलो आंसर बताओ. 41st. द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. किसका कमेंट है ये वर्ड्सवर्थ का कमेंट है. सारिका बताओ, लगती है ठंडी? बिल्कुल नहीं लगती ना. अभी शशि से पूछ रहा, बिल्कुल नहीं लगती. 1% मैंने आज तक नहीं देखा इतनी शादियां अटेंड करने के बाद कि किसी लड़की या किसी महिला को ठंडी लग रही हो. लगती नहीं शशि ना? Choose the correct word to fill in the blank in the sentence given below. Wordsworth was a great lover of natural scenery and 4 sites दिए हैं, आपको भरना है. घर आके बहुत लगती है, ये हो सकता है मामला. घर आके बहुत लगती है ठंडी, खाली बाहर नहीं लगती. हाँ, शादी में तो जाना ही है, रोज ही रोज का न्योता शुरू हो गया है. एक तो 28 को था, एक 23 को था. कहाँ जाए, चले जाए न्योते में. तो तुम्हारी क्लास का क्या हो, दावत खत्म होने के बाद ठंड लगती है. आज जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना, ठंड तुरंत लगती है, क्योंकि असल में जैकेट गाड़ी में ही रख लेते हैं. जैसे अंदर आएंगे गाड़ी में तुरंत पहन लेंगे. ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड साइट. इस साइट का मतलब क्या होता है? CITE. साइट का मतलब कोट करना, साइटेशन, कोटेशन होता है. और SITE साइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोकेशन, वेबसाइट जैसे होती है ना. और इस साइट का मतलब क्या होता है? विजन. और इस साइट का कोई मतलब नहीं होता है.
ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या है, यहां पे राइट आंसर है ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड साइट, सी इसका राइट आंसर है। मैं भी तो इसी सोसाइटी में रहता हूं रिंकी, जूली, मैं भी यही हूं इसी दुनिया में। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक विद द सेंटेंस गिवन बिलो। वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड साइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझको तो लगती है ठंडी, शादी पार्टी में तो और पक्का लगती है, अब रामपुर वालों को नहीं लगती होगी। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम, फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ कौन सा है? फटाफट करिए, आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, राइट, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम 1793। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर्ड टू, व्हाट आर द लूसी पोएम्स? जिम कार्बेट जाकर भी नहीं लगती। हाँ, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि तुम दावत में गई थी और बिल्कुल गर्मी लग रही है, एसी चला के बैठे हो। वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स, किसको कहते हैं? लूसी पोएम्स, राइट, किसको कहते हैं? लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स के बारे में कल आपने बात कर ली थी। लूसी पोएम्स आर 5 पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, 4 ऑप्शंस दिए हैं। Lyrical ballads appeared with 6 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, 10 by Coleridge, 10 by Wordsworth, 4 by Coleridge, 15 by Wordsworth, 4 by Coleridge and 19 by Wordsworth। अरे रिंकी, मैं घर के अंदर हूं ना, घर के अंदर थोड़े न लगती है, बाहर लगती है कि। अजय मिश्रा का जवाब हो गया गलत। गीता कनौजिया का भी जवाब हो गया है गलत। देयर वर टोटल 23 पोएम्स, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। ऑप्शन सही है डी। अजय ने तो जल्दबाजी में कर दिया है गलत, है ना, एक क्वेश्चन गलत किया, 4 नंबर से घाटे में चले गए। अभी भी वूलन पहने हो? पता नहीं यार, मैं तो घर में पढ़ाऊंगा, देखिएगा हमेशा एक ही टाइप दिखूंगा आपको। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ क्रिटिकल, फिलर भरना है, बताइए। नंबर 1 फिलर यहां पे है, 4 फिलर यहां पे है जो आपको भरना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ क्रिटिकल। नंबर 1 बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, पब्लिश्ड इन नंबर 2, इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स? Number 3, and in how many chapters? Number 4, भरिए, इसमें से क्या भरेंगे? क्वेश्चन नंबर 46, पूजा बुशरा नैनीताल ही चले क्या, वही रहा जाए कुछ दिन? भावना रीता राज, भरिए फटाफट भरिए। सपना, अजय मिश्रा, वेरी गुड। फिरोज, नीरज, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। बुशरा से निशा बिहान, शशि, अपर्णा, जूली, रमेश, गीता। सर प्लीज 46 डी, डी है, चलो कोई नहीं। प्रियंका शर्मा, देखता हूं अभी क्या है।
मैंने तो अभी देखा ही नहीं क्या क्या भरा जाना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया is the autobiography of Samuel Taylor Coleridge। लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी है वो, बायोग्राफी तो ये होता है जो कोई और लिखा हो, राइट। बट लिटरेरिया बायोग्राफिया वाज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई है, ऑलराइट। एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश्ड इन 1817। ये यूपी टीजीटी का भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन 2 volumes, not in 5 volumes। And then obviously there were total 23 chapters। Answer is A। Biographia Literaria is a critical autobiography by Samuel Taylor Coleridge, published in 1817 in 2 volumes and 23 chapters। All right, right answer is A। A for इलाहाबाद। कितने लोगों का सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47th। द फ्रेज PHRASE, the phrase willing suspension of disbelief is associated with, willing suspension of disbelief is associated with, किससे एसोसिएटेड है? लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। willing suspension of disbelief। Question number 47th। Come on. Willing suspension of disbelief. The phrase appears in Biographia Literaria, chapter number 10। Chapter number 10 of Biographia Literaria, the phrase willing suspension of disbelief appears। So right answer is C, right। अलंकार मिश्रा जी, right answer is C here। Biographia Literaria का टर्म है willing suspension। देखिए कॉलरिज के कौन कौन से टर्म्स हैं? willing suspension of disbelief, number 1, number 2 fancy, number 3 imagination, primary and secondary imagination, ism plastic imagination, right। ism plastic, ये सारे phrases सैमुअल टेलर कॉलरिज के हैं that he has used in the book Biographia Literaria, right। जी केंद्रपाल विद यशवंत वानी सिंह, इतना बड़ा नाम। There is no essential difference between the language of prose and that of metrical composition। No essential difference between the language of prose and language of metrical composition। This line is the part of preface to lyrical ballads, right। preface to lyrical ballads का part है ये, and preface to lyrical ballads was written by William Wordsworth। Preface to lyrical ballads was written by William Wordsworth and it was added to the second edition of lyrical ballads in 1800। There should be no difference between the language of prose and that of metrical composition। There should not be any difference at all between prose and poetry। And Wordsworth says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings। It takes its origins from emotions recollected in tranquility। And Wordsworth says that poetry is the finer spirit of all knowledge। And Wordsworth says that a poet should be a teacher or nothing else। And I want to be a poet or nothing else।
and Wordsworth says that poetry should be written in the language of common men, right? The language that common people use, उसी language में poetry होनी चाहिए. It means there should be no difference between the language of prose and that of poetry. All right. Right answer to the question is A here. Next question, 49th. Coleridge's Biographia Literaria is a reply to Shelley's Defense of Poetry, Lamb's Tales from Shakespeare, Wordsworth's Preface to the Lyrical Ballads, and Johnson's Preface to Shakespeare. बताओ आंसर. Coleridge's Biographia Literaria is a reply to. Biographia Literaria was originally intended to be a preface. एक preface के लिए लिखा था इन्होंने, शुरुआत की थी, and later it became a complete book. तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि for which anthology Samuel Taylor Coleridge started writing of Biographia Literaria, और एक ये क्वेश्चन है कि Biographia Literaria was a reply. किसका रिप्लाई था? Biographia Literaria was in fact replied to his friend William Wordsworth's theory of poetry that he had propounded in Preface to Lyrical Ballads. Preface to Lyrical Ballads में क्या बात की थी कि poetry should be written in the language of common men, and Coleridge didn't agree with Wordsworth on this point, and to criticize William Wordsworth he wrote entire book, और उस बुक का नाम था Biographia Literaria. All right, next question, that is question number 50. This question has already been done. Which of the following was not contemporary of Wordsworth and Coleridge? Answer is D. A.C. Swinburne. Next question. There are two statements, assertion and reason. Assertion is A, reason is R. Dr. Johnson's The Lives of the Poets carries critical and biographical studies of poets he admired. All right. It does not, however, carry a life of William Wordsworth. This is assertion. Reason is Dr. Johnson singled out poets whom he not only admired but also adored. This explains his omission of Wordsworth. A is wrong, R is correct. A is true, R is false. A and R both are true. Neither A nor R is true. Now tell the right answer. Question number 51st. जी आंसर करिए फटाफट फटाफट. जूली, बुशरा, केंद्रपाल, नेहा, सोनू, सपना, शाबाश. Come on, come on. Right answer to the question. Ajay Mishra, Bhavna, Shashi, Ramesh, very nice. गीता कन्नौजिया. लॉक किया जाए? लॉक करते हैं, ठीक है. और लॉक करने का रिजल्ट फिरोज और नीरज ने भी दे दिया है अपना आंसर, और किसी का भी आंसर सही नहीं है. सबका आंसर है गलत, बड़ा वाला गलत है. जैसे ही आपका रटा रटाया वाला क्वेश्चन नहीं आता वैसे ही मामला पलट जाता है. जैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता आपका बच्चों वाला टीजीटी पीजीटी वाला, वैसे ही गच्चा खा जाते हो, है ना. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो. सैमुअल जॉनसन, भावना, तुमसे तो ये उम्मीद ना थी.
because you are not for UP, TGT, PGT. You have read the syllabus of DSSSB, right? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स कब पब्लिश हुई थी? 1779 से 1782 तक. एंड वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770. और अगर वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा ही हुए थे तो 1790 जो है 9-10 साल में ही उनकी बायोग्राफी लिख देते क्या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन? ऐसा कैसे हो सकता है? और 1770 में पैदा हुए हैं और 1793 में उनका पहला वॉल्यूम आता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस. तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. और 1792 में तो इनकी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी जा चुकी थी. ये जो स्टेटमेंट है जॉनसन्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स कैरीज क्रिटिकल एंड बायोग्राफिकल स्टडीज ऑफ द पोएट्स ही एडमायर्ड, यहां तक तो सही है मामला. जैसे कह रहा है डज नॉट हाउएवर कैरी अ लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ. लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ नहीं है, इसलिए नहीं है कि एडमायर नहीं किया था, ऐसी कोई बात नहीं है ना. सेकेंड फिर कह रहा है कि डॉक्टर जॉनसन ने छोड़ दिया था उनको क्योंकि वो उन्हीं पोएट्स के बारे में लिखते थे जिनको वो चाहते थे, है ना. दिस एक्सप्लेन्स हिज ओमिशन ऑफ वर्ड्सवर्थ. तो राइट आंसर यहां पर कौन सा आया? ए इज रॉन्ग कि ए इज ट्रू, ये बताओ. हाउएवर इट डज नॉट कैरी अ लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ये मामला तो बिल्कुल सही है ना. ए ऑप्शन इज ट्रू, है ना. ए इज ट्रू और आर क्या है? आर इज फॉल्स. सबका आंसर क्या है? बी है ना. कितने लोगों ने बी आंसर डिलीट कर दिया है? फटाफट अब बता दीजिए. कितने लोगों ने अपना आंसर इतनी देर में चेंज करा है? और इसका राइट आंसर बी ही है. ठीक है, ए इज करेक्ट एंड बी जो है रीजन जो है उसका दैट इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 52nd. नेचर लवर को भी राम राम. रेने वैलेक 20th सेंचुरी क्रिटिक है, इज ऑफ द व्यू दैट, यहां भरना है आपको फिलर. इज अ लिंक बिटवीन जर्मन ट्रांसीडेंटलिज्म एंड इंग्लिश रोमांटिसिज्म. दोनों के बीच का लिंक कौन है? बड़े मजाकिया हैं. यस, यू आर ट्रू. Who is a link between German transcendentalism and English romanticism? बोलो आंसर फटाफट. 50 सेकेंड. सोनू, जूली, सपना, सारिका, श्वेता, केंद्रपाल, फटाफट बताइए आंसर, बताइए. रुकिए नहीं भाई, चलते रहिए. चलती का नाम गाड़ी है. रमेश यादव, शाबाश. पूजा, रीता राज, वेल्डन. इस बार तो पक्का वाला वेल्डन है ना. इस बार पक्का वाला वेल्डन है. आंसर करिए फटाफट. भावना, गीता, ये www क्या है भाई? ये कौन सी वेबसाइट है? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस बार पक्का किसी का सही नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर है सी, Coleridge. Coleridge was the first one who brought German philosophy to England. जर्मन फिलॉसफी, इमैनुअल कांट की फिलॉसफी स्पेशली, डेविड ह्यूम की फिलॉसफी स्पेशली वो इंग्लैंड लाए थे. राइट, डेविड ह्यूम की और कांट की फिलॉसफी. और जो थियोरी ऑफ इमेजिनेशन है मिस्टर कॉलरिज की, वो पूरी तरीके से थियोरी कांट की थियोरी थी और वहीं से लाए थे. थियोरी ऑफ एसोसिएशन, जिसको ये फैंसी बताते हैं, ये थियोरी वो जर्मनी से ही लाए थे. डेविड ह्यूम की वो थियोरी थी. और इसलिए रेने वैलेक सेज दैट
Samuel Taylor Coleridge is a link between German Transcendentalism and English Romanticism. इसका आंसर सी है और पूजा का सही है, वो हमारे से बाद में आंसर करी थी और किसी का आंसर सही नहीं है। जर्मनी का जैसे नाम आएगा, कॉलरिज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी को इंग्लैंड लाने वाले जो थे वो थे सैमुअल टेलर कॉलरिज। ऑलराइट, ही वाज अ लिंक बिटवीन जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड इंग्लिश रोमांटिसिज्म। All right, then next question. Who among the following English poets defined poetic imagination as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am? Kisne, which romantic poet, which English poet defined poetic imagination as repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the finite I am? शुरू होता है आपका टाइम। अब आंसर बताइए फटाफट। अजय मिश्रा, शाबाश। कमान कमान, सपना, रिंकी, जूली, तबस्सुम, बुशरा, अजय। अजय भाई दो आंसर नहीं चलेगा, एक आंसर पे स्टिक करो। रमेश यादव, नेहा, केंद्रपाल, बुशरा, यास्मीन, शाबाश। शशि दुबे, सही माना जाए? गलत। पोएटिक इमेजिनेशन को डिफाइन करने वाला पर्सन कौन था? हु डिफाइंड पोएटिक इमेजिनेशन? Coleridge. This is the right answer. जी, गीतिका, सपना, अलंकार, पूजा. Right answer to the question is Coleridge. Coleridge divided imagination into two parts, primary imagination and secondary imagination. According to him, primary imagination is perceptive, primary imagination is receptive, it receives the raw material, and secondary imagination is creative. Secondary imagination has the creative power. It takes the raw material collected by the primary imagination and it dissipates, it dissolves the raw material in order to create something new. Right? कुछ नया बनाने के लिए वो secondary imagination का काम है. Answer to the question is C. Next question. 55th. Yes, you are. In his 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey grouped the following poets together as the Lake School of Poets. 3 questions is in one question. Number 1, who reviewed Biographia Literaria? Answer is Francis Jeffrey. Francis Jeffrey reviewed Coleridge's Biographia Literaria. Next, Lake Poets, Lake School of Poets, the term, the phrase was given by Francis Jeffrey. और फिर who were the Lake Poets, ये आपको बताना है. और ऑप्शंस ये है: कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, बायरन, कॉलरिज, ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे. और सबका आंसर है डी. इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, है ना? सबका आंसर सही है. Wordsworth, Coleridge and Robert Sade, they were grouped as lake poets by Francis Jeffrey. Next question, 56th. Which romantic poet coined the famous phrase spots of time? और इसी spot of time का एक और नाम है मूवमेंट.
who coined the phrase spots of time, या who talked about the movement in his poetry? Keats, Wordsworth, Coleridge, लॉर्ड बायरन. फटाफट आंसर बताइए. स्पॉट्स ऑफ टाइम की बात कौन करता है? Spots of time is the time of childhood that always inspires the poet, and Wordsworth talks about the spot of time profusely in his poem The Prelude. The Prelude में spots of time की बात, movement की बात करते हैं मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who defined poetry as the best words in best order? सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है. Who defined poetry as the best words in the best order? Best words in best orders किसने बोला है? सारे लोगों को आंसर देना है, फटाफट आंसर दे दीजिए. Poetry is the best words in best order. शाबाश, कमान, सबका आंसर देख रहा हूं, फटाफट आंसर करते रहिए. बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर. इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना. बुशरा, फिरोज, नीरज, प्रियंका, सारिका, धर्मपाल, सहेनिशा, बिहान, भावना, शशि, सपना, अपर्णा, पूजा, श्वेता, रमेश, रीता, जूली, बुशरा, सोनू, अलंकार, अजय मिश्रा. वाह, क्या बात, अद्भुत अद्भुत आंसर है लोगों के. और मेरा आंसर सबसे डिफरेंट है. मेरा आंसर है कॉलरिज. कॉलरिज ने डिफाइन किया था पोएट्री को द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर इन 1827. पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर 1827 में डिफाइन किया इसको कॉलरिज ने. शैली और कीट्स ने नहीं, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं. आंसर अपना अपना चेंज कर लीजिए. आंसर इसका बी है. क्वेश्चन नंबर 58. हाँ, 58. हाई सेज ऑफ सेज द सेज ऑफ हाईगेट. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका आंसर सैमुअल टेलर कॉलरिज है. 59. बहुत कंफ्यूजन था तो गलत तो कर लिया. बहुत कंफ्यूजन था तो, और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए रोज क्लास होती है आपकी. इसी कंफ्यूजन को खाली खत्म करना है बस. सैमुअल टेलर कॉलरिज रिस्पॉन्स टू द इमोर्टैलिटी ओड वाज डिजेक्शन एंड ओड, राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर, टू वर्ड्सवर्थ और कुबला खान. अब ये किसी का गलत नहीं जाएगा, और अगर किसी का गलत गया तो समझिए सजाए मौत से नीचे कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना. और इसका आंसर मैं बताऊंगा भी नहीं. चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. सैमुअल टेलर Coleridge response to the first 4 stanzas of the Immortality Ode was dejection and ode. Answer इसका A है. Question number 60. Another essay, Reminiscence of the English
lake poets. Reminiscence of the English lake poets was written by Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth, Hazlitt, Thomas De Quincey. क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट आंसर करिए, आपका टाइम तो आज वैसे ही ओवर हो रहा है ना, बट वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के क्वेश्चंस आज खत्म हो जाएंगे। वैसे कभी खत्म नहीं होते क्वेश्चंस, बट हाँ एक फॉर्मेलिटी ये है कि ये खत्म हो गए, बीच बीच में आते रहेंगे, आप इनको रोक नहीं पाओगे, राइट। Reminiscence of the English lake poets was an essay by Thomas De Quincey. Thomas De Quincey का एक essay था Reminiscence of the English lake poets. Next question. Which of the following statements on the prelude by Wordsworth is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द प्रील्यूड? नंबर ए ऑप्शन, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टुमसली, ये ट्रू है, एवरीबडी नोज। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, बिल्कुल सही है। द सब टाइटल ऑफ द पोएम, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड and autobiographical poem. Next, the poem runs to 14 books. At crucial stages, the poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral and imaginative nature. ये भी true है। और poems like Michael, the old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden ways, nutting etc. are highlights of this poem, ये गलत है, राइट, ये इसकी पोएम्स नहीं थी। डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू, राइट ऑप्शन इज सी, रेस्ट ऑफ द थ्री आर ट्रू। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन, कुछ ना क्लियर हुआ हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 61 कर लिया है आपने, 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग। लूसी पोएम प्रिल्यूड में नहीं है, लूसी पोएम तो अलग ही मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नेचर देन द coarser pleasure of my boyish days and their glad animal movements all gone by. To me was all in all in these lines from Tintin Abbey revisited. Wordsworth is talking about, किसकी बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ? The second stage in his relationship with nature, the first stage in his relationship with nature, both the first and second stage in his relationship with nature, the third stage in his relationship with nature. किसकी बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पर? बोलिए। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए जरूर हो सकता है, बट फिर भी आपको आंसर तो करना ही है। अगर पेपर में आ गया तो छोड़ के थोड़े ही ना आएंगे, आंसर तो करके ही आएंगे, है ना, कि छोड़ के आएंगे। फॉर नेचर देन, देन का मतलब पास्ट। द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयिश डेज व्हेन आई वाज अ बॉय and their glad animal movements all gone by. Now the time is different. All such movements are gone by. I am no longer a boy now. To me was all in all. मेरे लिए तो सब कुछ था पहले और अब नहीं है. The second stage in his relationship with nature और the first stage in his relationship with nature. किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये दोनों की बात कर रहा है.
दोनों की बात कैसे यहाँ पे कर रहा है? यहाँ तो एक ही की बात कर रहा है ना। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज and their glad animal movements all gone by to me was all in all। ये जब की बात कर रहा है ना, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है, फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विथ नेचर की बात कर रहा है, सेकंड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर, नॉट सी। नेक्स्ट, Wordsworth got inspiration from the statement that verse may build a princely throne on humble truth। Verse may build a princely throne on humble truth, and this quote is taken from, ये कोटेशन कहां से लिया गया है? रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट बर्न्स और कॉलरिज। रॉबर्ट बर्टन की बुक कौन है? लिटरेचर पे चर्चा का स्वागत है। रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट बर्न्स and Samuel Taylor Coleridge। 4 options are given here, and the line verse may build a princely throne on humble truth, this line he borrowed from Robert Burns। Robert Burns is called the national poet of Scotland, and he is called the plowman's poet, and Wordsworth paid his tribute to Robert Burns in his poem Resolution and Independence, right? The Leech Gatherer, where he pays his tribute to another poet, Thomas Chatterton, calling him the sleepless soul and the marvelous boy। Sorry। वहीं रॉबर्ट बर्न से उन्होंने इंस्पायर्ड है यहाँ, और ये लाइन उन्होंने ली है। रॉबर्ट बर्न से कैसे इंस्पायर है? इन हिज पोएम एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, शायद आपने नाम ना सुना हो। एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स, रिटन ड्यूरिंग हिज स्कॉटिश टूर ऑफ 1803, वर्ड्सवर्थ मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज इंडेटेडनेस टू रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट से वो इंडेटेड है, उसको उन्होंने कबूल किया है। whose light I held when first it shone, and showed my youth how verse may build a princely throne on humble truth। Paying homage by adopting Burns' trademark standard hobby, Wordsworth evoked the lakeland peaks of Cripple and Skiddaw visible from both Grassmeres and Burns। Alright, I have qualified MP सेट एग्जाम। बहुत सुंदर, बधाई हो आपको, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपको बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीक योर गाइडेंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। डेफिनेटली आई एम होल हार्टेडली विद यू। लिटरेचर पे चर्चा, इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प, एनी नीड फ्रॉम माई साइड, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, you can write your message here in the comment box and I will definitely come to you। Congratulations, आपको एक बार फिर से very very good luck। Next question। I met a cottage girl, she was 8 years old, she said। Her hair was thick with many a curl that clustered round her head। These lines are, thank you so much, your teaching has helped me a lot sir। Thank you so much for your acknowledgement, but it is all your hard work। ये आपका हार्ड वर्क है जो आपको सफलता देता है।
टीचर तो सिर्फ एक गाइड होता है, टीचर तो सिर्फ एक मोटिवेटर होता है, टीचर तो ये बताता है आपको कि आपको पढ़ना क्या है, बाकी पढ़ना तो आपको ही होता है। और मेहनत हमेशा रंग लाती है, आपकी मेहनत से आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, द इंटायर क्रेडिट गोज टू यू। पूरी मेहनत आपकी है, पूरी क्रेडिट भी आपकी है। वो बताइए आंसर, कहां से ये लाइन ली गई है? She was 8 years old. She said her hair was thick with many a curl that clustered round her head. Or these lines are from the poem We Are Seven. We Are Seven is one of the poems of lyrical ballads. We Are Seven की ये लाइन है, ना कि लूसी ग्रे की लाइन है। All right, almost all of you have answered Lucy Gray, but इसका आंसर लूसी ग्रे नहीं, इसका आंसर We Are Seven है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Tale of the Star-Crossed Lover, Vaudreuil and Julia. Vaudreuil and Julia की स्टोरी लव क्रॉस्ड लवर की स्टोरी है, लाइक रोमियो एंड जूलियट। यहां पर भी फाइनली जूलिया डाइज लिविंग द बेबी टू बी नर्चर्ड बाय द हस्बैंड वाडकर। हु रोट द पोयम? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, पीबी शैली, सैमुअल टेलर, कॉलरिज। Who wrote the poem Vaudreuil and Julia? The poem was written by William Wordsworth. William Wordsworth की पोएम है ये about star-crossed lovers. Question number 66. Five years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from the mountain springs with a soft inland murmur. This is the first stanza. ऐसे नेम पढ़ती हूं तो लगता है कोई मेरा नाम बिगाड़ रहा है। कैसे? जूलिया, जूली, जूलिया, वाह क्या बात है। जूली, जूलिया, जूलियट, ये 3 फॉर्म टाइप लग रहे हैं ना। These are the opening lines of the poem. सबका जवाब सही होना है, ये किसी का भी गलत नहीं हो सकता। These are the opening lines of the poem Nta-Net Uppgt. 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters from their mountain springs with a soft inland murmur. Nta-Net Uppgt की ये ओपनिंग लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल करिए ब्लैंक, पढ़िए और ब्लैंक को फिल करिए। वर्ड्सवर्थ पोयम यहां पर एक भरा जाना है। It is spoken by one person to a silent auditor in a specific situation at a significant moment in his life. It is not a dramatic monologue proper, both because we are invited to identify the speaker with the poet himself, and because the organizing principle and focus of interest is not the revelation of the speaker's distinctive temperament, but the evolution of his observations, memories, and thoughts towards the resolution of an emotional problem. Identify the poem. Nta-Net Uppgt, Resolution and Independence, Immortality Ode, and to Coleridge. These are the 4 options. You have to pick the right option here. यहाँ पर which poem is being discussed here, about whom the critic says that it is not a dramatic monologue proper, right? It is not a dramatic monologue proper because it means it has something of a monologue and it is an इंटीरियर मोनोलॉग। क्यों नहीं ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर?
because there are two regions. और वो two regions कौन से हैं? We are invited to identify the speaker with the poet himself, and because the organizing principle and focus of interest is not the revelation of the speaker's distinctive temperament. What happens in a dramatic monologue? In dramatic monologue, the speaker speaks his mind. His distinctive temperament is revealed. Example के लिए My Last Duchess. In the My Last Duchess, the Duke of Ferrara, he reveals his mind. But in Tintin Abbey, the mind is not revealed. Right answer जो है इस क्वेश्चन का, that is Tintin Abbey. और ये जो कमेंट यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये M.H. एब्राम्स के कमेंट है टिंटन एबी पर, वहीं से लाइन ली गई है. राइट, टिंटन एबी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 67. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 68. Which of the following work is written as a poetic manifesto? Poetic manifesto are statement of revolutionary aims in which he denounced the upper class subjects and the poetic diction of the preceding century. Upper class language जो थी वो denounced है, previous age की जो poetic diction है उसको denounce किया है, and proposed to deal with materials from common life. और क्या proposal रखा है कि now materials must be taken from the common life, not from the upper class people, and in a selection of language really used by men. और ये option जो है that is preface to lyrical ballads. राइट, लास्ट वाली लाइन पढ़ के ही आप आंसर बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69. In his lectures on Shakespeare, Coleridge admired which plays and hated measure for measure. मेजर फॉर मेजर को तो हेट किया है, एडमायर किसको किया है, ये क्वेश्चन है. किंग लियर एंड एंटनी एंड क्लेपाट्रा, हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, और ऑल द अबव प्लेज वर एडमायर्ड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. बताइए आंसर. He hated measure for measure. That is a repeated question, but today's question is a bit different. Today's question asks which plays were appreciated by Samuel Taylor Coleridge, and the plays that were appreciated by Coleridge were King Lear and Antony and Cleopatra. King Lear and Antony and Cleopatra, these two plays were appreciated by Mr. Coleridge. Right answer is A. All right. Next question. Coleridge introduces his neologism ism plastic at the beginning of. Right. Coleridge talks about ism plastic power. Right, he talks about ism plastic power, and according to him, plastic, ism plastic means plastic that could be stretched, इसको आप stretch कर पाओ, that is ism plastic. And in which chapter of the Biographia Literaria he talked about this ism plastic power, this ism plastic neologism. नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड इन अ न्यू वे, एक तो ये मतलब है, और दूसरा मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ वर्ड. फ्रॉम विच चैप्टर द वर्ड इजम प्लास्टिक हैज बीन टेकन, किस चैप्टर से इजम प्लास्टिक लिया गया है, 10, 13, 14 और 15. बताओ फटाफट, फटाफट आंसर करिए. गीता, रीता,
धर्मपाल, फिरोज, जूली, फटाफट आंसर करिए। चले आगे चले, सही मान लें। कि छोड़ दें आप ढूंढोगे बाद में। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्लियर कीजिए। चलो क्लियर ही कराना है तो इसका आंसर ए है। क्लियर कराना है तो इसका आंसर ए है। एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 71st। This is defined as the living power and prime agent of all human perception। बता दिए भाई। What is defined as the living power and prime agent of all human perception? Primary imagination, secondary imagination, fancy or pantasocracy? क्या दे रही थी सपना? प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी और पैंटिसोक्रेसी। प्राइमरी इमेजिनेशन इज द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शंस। प्राइम एजेंट एंड living power of all human perception is primary imagination. Right answer to the question is A. Next and the last but not the least. Coleridge introduces the concept of I am in the Biographia Literaria, where he argues that the proposition that things exist outside the self actually presupposes the existence of the self I am। और ये लाइन इस चैप्टर से ली गई है। इसकी आपको लाइन बताना है, इसका चैप्टर बताना है। Coleridge introduces the concept of I am। यहां पर एक कैपिटल I और AM दिख जाए, समझ लेना कि एक कॉलरिज का टर्म है। एंड कॉलरिज ने इस कंसेप्ट को यूज किया है बायोग्राफिया लिटरेरिया में, और बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर नंबर 12 में। आंसर इसका ए है। देखिए सब ने इसका आंसर दे दिया है, राइट। और ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज आपने डे 4 कर लिया है कंप्लीट। कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ हैव बीन डन। अगर अभी भी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ पे कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। आप वहां पे कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हो। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा तो अगले क्लास में मैं उस क्वेश्चंस को शामिल कर लूंगा, उसको डिस्कस कर लूंगा, डिटेल उसका बता दूंगा। और जो नेक्स्ट क्लास का आपका विषय होने वाला है दैट इज हियर, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन Percy Shelley and John Keats। John Keats and P.B. Shelley next class इन दोनों पर होगी। So it is prior information. I hope you will prepare these two poets and critics for your next class.
Thank you so much for joining with me. Thank you so much for bearing with me. Thank you so much for joining the class. All the best. Good luck. और हाँ, खुद तो देख लिया है ना, और खुद देखने के बाद चैनल को, इस क्लास को उन फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा who are really preparing for EMRS एग्जामिनेशन. ये उन्हीं के लिए है एंड डेफिनेटली वो उनको हेल्प करेगी. जब यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आएगा तो फिर आऊंगा मैं ऐसे ही मैराथन लेकर के नए क्वेश्चंस के साथ, आपके सबके लेवल के क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. गुड लक. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद. जय भारत.